Hi, good evening, everyone. I'm Dr. Anshul Divakar, and today I'm delighted and happy and grateful to be sharing this screen with a wonderful student of mine from my resident masterclass. And she's somebody who has exceeded my expectations and maybe her own expectations because achieving gold medal in an undergraduate exam is pretty much the game of you, how much time you spend with the books. It's more of a theoretical thing, but to be able to achieve gold medal in your PG exams, along with that, getting the award of best thesis tells the commitment that a student puts up through the journey of 3 years in the department. So I welcome Dr. Shafak Mariam, who is a postgraduate MD anesthesia resident from IPGMER Calcutta, who has recently finished her exams and has scored the glorious gold medal in her final exams, as well as received the best thesis award. So, heartiest congratulations, Shafak. Thank you so much, sir. Thank you so much for such lovely words. Uh, sitting in front of this video, like having a conversation. Even now, I'm feeling like I'm actually attending one of your classes. No, So, so it's actually I tell you frankly, as a teacher, uh, I do work very hard on the things that I want to teach to you guys, and I take a lot of efforts in making it very very simple. But before that, it takes huge amounts of effort to understand it and take all the sources. And then my family often says that you are doing too much. You should not really put so much hard work. Why are you doing so much? You can take these things easier also. And then I tell them that this is just the background picture, but my real satisfaction comes when this makes a difference in the life of a student and they end up doing really good after understanding the things, because to mug up and to go and write in the exam is pretty much very easy thing to do if you just keep on cramming, but to understand something and do so, this is my moment of glory. I'm sorry I'm taking it away from you, but you doing great is actually my moment of glory, because then I feel ki, acha, whatever I'm doing is perfect. I don't need to change the way. So tell me, how are you feeling? you don't know how much I was waiting for my. It actually took like 3 months for them to declare the results. How I was eager to like share this with you. Like, chalo, thesis I knew I got, but with the results were pending. Yeah. So, like, I just So like tell us about your journey. Take us through the 3 years. The first and the most elusive question is: you did you ever thought in your undergraduation that you will become an anesthetist? no, sir. So you took it by Like chance. everyone else. Okay. Anesthesia, actually, while preparing for NEET, I was working in a corporate hospital in an ICU. So from there, my liking towards anesthesia developed. But the exact that core anesthesia that we do in the OT, I had no clue about it. Hmm. So and then anesthesia then because of critical care became my second choice. So I wanted to do derma, but then I ended up taking anesthesia. But it was like I should now accept what I'm getting it instead of wasting on another year. And provided that the institute was so good. Yeah, you actually ended up doing it from one of the best institutes in India for doing anesthesia PG. No doubt about that. And if it is a good institute, it instills a lot of confidence in you regarding your training, and that makes a huge difference, I feel. So uh, as you know, in the first year, during my internship, I guess I just gave one or two spinals and then saw people giving GA, and that's all. Like whatever I read before NEET, the anesthesia. Apart from that, whatever goes inside the or how important anesthesia is, I had no clue about it. So first year, mostly the initial months went absorbing things, and the duties would be so hectic. Uh, with 12 to 13 hours, like on calls per week, per month. So studying was like actually it took a backseat. Whatever studying, what happened was because I was really lucky to have really great seniors. So they were academically so sound and they loved teaching. So they would like, after everything was induced, they would make us sit in one corner and like teach one topic.
So from there, like I would, and then give us some article, and then in the phone, I would just read it in between the cases. So that's how the initial first years went. And then the later part of the first year, I had my marriage coming up. So another thing like, padhai to ab hogi nahi. So, hua. And a bit like in my first year, yeah, I was given a seminar on central neuraxial block. So that was the topic that like पढ़ लेंगे, पढ़ के खुद से बनाएंगे PPT. So I like gave my full effort. तो वो topic कर लिया था. And then in that second year, early part of my second year, I mostly like, because it's become like compulsory to do paper, poster, and BCBR and all these things. So I thought like before second year ends, I have to get over with all these things. So I focused on all these aspects. And then in the later part of the second year, I was introduced to your sessions by my roommate. So she was a diploma student, DNB diploma. So, but her exams were just coming up. So she told me like, see, there's this class from DAM. So you can opt for it because you still have a year. I cannot do it because my exams are just coming up, and it's just in the nascent. I guess there were just 2 modules that were there. So then I subscribed to your classes. So initial 1 or 2 months होता है procrastination, नहीं हाँ ठीक है थोड़ा देखा, but I was liking it. So फिर in meanwhile I was also working on my thesis. I had a target that at least my data collection and everything, leave with the analysis part, I'll complete it. So this was going on, and then meanwhile we had my district residency program also. The 3 months we were posted in a district hospital. So, and there we got like a pretty good time to explore things. So that is when I started actually to seeing your videos and writing. So like you used to say, like मैं लिख रहा हूँ तो तुम भी लिख सकते हो. तो I would write. So I would write everything that I had started writing. So that initially it was a bit difficult. Like habit तो हो गया था. So but नहीं थोड़ा focus करके I would write. ये किया, and then also with our I had one PDF which my seniors gave me. So it contained all the MD 10 years and DNB and DA questions. So I started going through it, like हर topic में है क्या. तो ये second year mostly ऐसे गया. And then I was now I was literally used to your videos. मतलब करना है. Most of the time वो live was difficult. कुछ live होता था, but some recorded ही. But I would make sure that इतना target है तो इस week में इतना लिखना है. And then final year तो thesis है, and ये सब आया, तो you doing it simultaneously because seeing your videos and writing became a habit that कुछ भी then अब बिना लिखे नहीं होता था. Whatever the rest that was not covered in your videos, जो वो बाहर से पढ़ रहे हैं, I have to write it down. मेरा एक अपना notes होगा of that topic. So this I started, and finally in June, or just after submitting the thesis, so 6 months I was left with. तब meanwhile in the second years, thoda initially a textbook and all I would go through. Barash and Stolting were like chapter wise I would go through. And then just when 6 months were left, I switched to question wise. So, and aiste like I gave up on Barash and Stolting, like बहुत content has, switched to race. And race was also introduced, like you posted all the PDFs and with that index. So it was very easy to find the answers in race. And then anesthesia tutorial. So this was like a go-to thing. कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ से मिल ही जाएगा. So, and plus race is very good with the concepts also, just not for answers. So वो था, and from there also I would extract and then write it. ये हुआ, and in the last 3 months of before my exam, I made that planner जो मेरा यूजी तक कभी काम नहीं करता था, but this time I was like करना है. So in between you had the duties and all, तो करना ही पड़ता, because duty के बाद it would be so tiring. तो अगर plan नहीं है तो you will be like lost. So I had that plan that September, October would be just to finish
the first reading, whatever be it, karo jitna ho. And the November month was reserved for reading. So what particular thing I did was like that PDF I had for question bank, that I made 3 copies. So one was for first reading. Second was if I could revise, I'll go ticking. Third was if I could reproduce it without seeing. So ऐसे, although पूरा नहीं हुआ, but I tried. So this was something which worked. So, and in the last 2 months, like we were given off 15 days before our exam. So last 1 month, we were told like you come alternatively. And last 15 days, you'll get off. So the last 2 months when I was posted in the ENTOT. So there we had one professor, she's very nice. So we asked her that, ma'am, I'll read one topic and I'll tell you the previous day, like I'm reading this, and then next day, please discuss this with us. So ऐसे करके I tried to complete all my case discussions and some random topics which we actually do not discuss. So ये हुआ. This was really helpful. And all उसी time पे when I would like, I had actually switched from hostel to home. I would travel. So half an hour it would take in car to reach the hospital. So while I was traveling, so your videos would be the time I would revise. 2x पे चला के आने जाने में, this was the time for revision. So ऐसे करके I like managed, and last 15 days तो पूरा like सोना and all तो सबका होता है like when. So this was how I completed. Wonderful. So you actually ended up doing everything. जो any topper, we expect any topper to do. You made a schedule, you stuck to it. You planned your 3 years. Usually हम go with the flow type के होते हैं कि हाँ देखेंगे, फर्स्ट ईयर में सोचते हैं सेकंड में करेंगे, सेकंड में सोचते हैं थर्ड में करेंगे, और जब थर्ड में गाइड जो है वो परेशान करना चालू करता है तब पहले डेटा कलेक्शन चालू करते हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर होता नहीं है तो ऐसा लगता है कि हाँ कर लेंगे. सो गुड थिंग इज दैट यू प्लान्ड योर 3 years. फर्स्ट ईयर आई ऑलवेज बिलीव दैट शुड बी लर्निंग बाय द साइड ऑफ द पेशेंट. उसमें बहुत ज्यादा बुक्स नहीं सोचना चाहिए. जितना बात कर लो, जितना सीनियर से ग्रास्प कर लो, जितना अपने आसपास चीजों को देख के समझ लो, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. देन सेकेंड ईयर डेफिनेटली, एंड आई थिंक ये DRP बड़ी अच्छी चीज आ गई है. इनिशियली व्हेन दे इंट्रोड्यूस्ड इट आई फेल्ट वेरी बैड. मुझे लगा ये बच्चों का 3 महीना खराब कर रहे हैं क्योंकि DRP में क्या ही करेंगे. बट नाउ आई एम रियलाइजिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फिनिश थीसिस एंड लॉट ऑफ स्टडीज इन DRP. तो दे आर वेरी हैप्पी कि थोड़ा 3 महीने का ब्रेक मिल गया और थोड़ा इंडिपेंडेंट वर्क भी मिल जाता है. LSCS एंड हर्नियाज यू गेट टू डू ऑन योर ओन. So you utilize your DRP very well, and very good that you first finish the part that is mandatory, that is your paper poster presentation, your research part, the thesis data collection part, because these are some mundane things that just take up your time. And then when the real time started, when you are in third year, when everybody expects कि अब आपको सब आना चाहिए, so that is when you started doing things. And very good that you kind of left the standard textbooks at the right time, because I feel कि ना standard textbooks थोड़ी सी ना overrated हैं हमारे फील्ड में. सब लोग बात करते हैं मिलर्स की और सब लोग बात करते हैं बराश, टोल्टिंग, ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा. बट मैंने सब पढ़ा है और मैंने रियलाइज किया है कि वो कोई इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाते हैं और उनको रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज वेन यू राइट एवरीथिंग अंडर जस्ट लाइन्स तो कहाँ से आप उस चीज को यू विल रिमेंबर. तो रेस दैट वे इज अ वंडरफुल रिसोर्स दैट दे हैव क्रिएटेड. एंड आई हैव बीन डूइंग रेस सिंस द टाइम आई वाज डूइंग PG. 2013 में मैंने अपना डिप्लोमा चालू किया था. आई गॉट इंट्रोड्यूस टू रेस इन 2014 और मैं 2014 से मैं आज भी मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ माई रूटीन. में कोई ना कोई रेस निकाल के कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ता ही रहता हूँ. इट्स अ वेरी गुड बुक. तो बहुत बढ़िया. एंड यस, like you said, no, I get this message almost every day from some or the other student कि sir, why don't you give printed notes? So I keep telling them कि the exam wants you to write for 4 days, 3 hours each day, writing 10 questions. If the pattern of the exam wants you to write, your practice should make you write. It is very easy for me to print a book and give it to you. It is very difficult for me to sit here and keep writing every single thing with you. And that is why I write.
सो दैट यू डोंट फील कि मैंने तो पीपीटी में लिख के बस पढ़ रहा हूँ और आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिखोगे। आप बोलोगे सर आप तो लिखते नहीं, मैं क्यों लिखूं? तो मैं भी लिखूंगा आपके साथ। मैं लिख रहा हूं तो आप लिख सकते हो। इट इज नॉट गोइंग टू टेक मोर टाइम देन दैट। जितने देर मैं लिख रहा हूं उतनी देर आपका भी पेन चले, एंड दैट इज व्हाट आई फील मेड अ डिफरेंस, है ना? बिकॉज व्हेन यू गो इन द एग्जाम you have a very clear format in your mind because you have written those things so many times कि now any question that comes you know the exact format। मैं start यहाँ से करूंगी, writing ऐसी आएगी, हाथ ऐसे घूमेगा। So it's a very important message that I want to give through you to all the students कि देखो जिसको भी ये लग रहा है ना कि ये, because there are at least I feel 3000 books available in the market for anesthesia, सब तो printed ही है ना, Exactly. फिर भी तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। इफ प्रिंटेड बुक पढ़ना इतना आसान होता तो हम पढ़ लेते, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन राइटिंग। सो नाइस पॉइंट्स यू हैव टोल्ड इन such briefly. And yes, this podcast thing na, this is something that I envisioned when I started reducing the size of my videos to 40-45 minutes. If you would have noticed, module 1 ke videos are 1.5, 2 hours, 2.5 hours. Yes, But right. then very soon I realized, because someone else also did this and told me कि सर मैं आपके वीडियोस ना वो 15-20 मिनट के ट्रैवल टाइम में फिनिश करता हूँ 2x पे। तो मैंने बोला अच्छा, जब आप 40 मिनट को 20 मिनट में ही देख रहे हो तो मैं 40-45 मिनट्स के ही बनाता हूँ, तो वॉच इट ऑन द गो ओनली। So that becomes a quick revision thing. So that is something that you did wonderfully well. Tell us, ये पूरा idealism में is there anything that haunted you, something that you thought you would have done better, or something that you missed? Yeah, like I guess I realized that I had that target, like I wanted to complete everything, and in that जोश, I guess like बहुत सारा, नहीं पूरा कॉन्सेप्ट लेना है, नहीं Hmm. यहाँ से इतना मतलब नहीं उठाना है, like कौशिक ज्योतिनाथ. So I did switch to Kaushik Jyotirnath, like I guess so just 15 days before exam मैंने कौशिक ज्योतिनाथ उठाया. तो but the thing is that कि जब I was using कौशिक ज्योतिनाथ, I knew like वहां से क्या उठाना है basically, because it's vast. तो सब कुछ, as you said, you also told us in one of the videos के फॉर्मेट वही है, तुमको बस वही कंसर्न्स गोल्स का खेल है वहां पे, तो See, I वही. like this point. मैं ये बात बोलता सबको हूँ, लेकिन कोई उस वीडियो के उस पार्ट को इतना ध्यान से सुनता नहीं है। अल्टीमेटली इट्स जस्ट अ गेम ऑफ अवॉइडिंग हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस, एल्कलोसिस, मेंटेनिंग हेमोडायनेमिक्स, adequate pain relief, post operative care, early feeding, mobilization. Anesthesia is, if you have to write anesthesia for a coexisting disease, you cannot go wrong if you write these points. कुछ भी नहीं बदलता, हर पेशेंट में यही होता है। बट आप उसको समझते हैं क्या, क्या आप उस थीम को पकड़ सकते हैं? अगर आपने वो थीम पकड़ ली कि यार को एग्जिस्टिंग में तो कुछ रखा ही नहीं है, यू हैव टू ओनली रिमेंबर 4 स्पेसिफिक पॉइंट्स, और बाकी पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे चलता है। दैट इज वेयर यू स्टार्ट सेविंग लॉट ऑफ टाइम। तो वही था दैट प्रीवियसली जैसे तब कौशिक ज्योतिनाथ पढ़ती थी तो इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट, बट आफ्टर कंप्लीटिंग अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स तब रियलाइज हुआ कि नहीं, ये फॉर्मेट है, यू हैव टू जस्ट एक्सट्रैक्ट योर नॉलेज. तो मे बी ये और थोड़ा पहले करती तो आई गेस रिविजन ज्यादा होता. और तो ज्यादा। टॉपिक्स लाइक छूट गए थे. तो आई वुड लाइक राइट के जो इन माई फर्स्ट रीडिंग जो पर्टिकुलर सिस्टम से ये नहीं हुआ, आई वुड राइट इट इन स्टिकी नोट एंड स्टिक इट ऑन द वॉल, कि कभी जैसे टाइम मिला याद आया तो एक दो टॉपिक्स ऐसे रैंडम पढ़ लिया. तो आई गेस वो थोड़ा पहले यूज कर लेना चाहिए था, ये था. और फिर टाटा को थोड़ा मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था. पहले लोग थे ना, डोंट रीड गुड टाटा, अभी टाटा मत पढ़ो, तो उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था मैंने. तो ये नहीं करना चाहिए था. टाटा इज अ रियली गुड बुक, जो लास्ट 1 मंथ में मुझे रियलाइज हुआ कि टाटा में सफिशिएंट है. सब कुछ है। इट इज अ कंप्लीट बुक फॉर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। मैंने अपना डिप्लोमा, जो फर्स्ट डिप्लोमा था जो दिया था, तो उसमें मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बिकॉज डिप्लोमा इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो वो बाय द टाइम वी रियलाइज्ड कि क्या करना है तब तक तो एग्जाम आ गया। तो टेक्स्ट बुक तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आई जस्ट रेड टाटा, बट आई रेड इट 4 टाइम्स। ये था, मैं बहुत मेहनत किया था, एंड आई रेड टाटा 4 टाइम्स, एंड डिप्लोमा का एग्जाम वेंट लाइक अ स्मूथ सेलिंग राइड।
मुझे कुछ भी नहीं ऐसा लगा कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को हर चीज आती थी बिकॉज सब कुछ टाटा में से आता है. Right. So it's a really really good book. Yes, definitely. Tata will like 4 pages, एक particular topic, but it'll give you everything that you should know about that Yes, topic. yes. मुंडेन है थोड़ी लिखने में, क्योंकि ब्लैंड है, ना कलर चेंज होता है ना कुछ, बस एक के पीछे एक क्वेश्चन क्वेश्चन, बहुत इमेजेस भी यूज नहीं करते हैं वो लोग. तो यस, दैट वे यू नीड टू कलर इट अप योर सेल्फ, अलग अलग चार पांच हाइलाइटर लेके बैठो, और देन इट स्टार्ट्स टू मेक मोर सेंस. बट यस, इट्स सो सी दैट इज व्हाट वी कीप टॉकिंग अबाउट ना, कि रिसोर्सेज तो चारों तरफ हैं, आप उनको यूज कैसे करते हो, and how much do you plan your exam. Like you had 3 phases of your academics, and this is what I have discussed in my approach to academics video. If I don't know if you have seen that or not, but every new first year who joins, I send them that video and I tell them कि ये इस चीज को थोड़ा सा imbibe करो कि first year is learning by doing, second year is learning by teaching, and third year is only learning for exam. बिकॉज अल्टीमेटली आप एनेस्थेटिस्ट बनते हो एग्जाम पास करने के बाद. तो कोई अगर एक मॉरल हाई ग्राउंड लेके चलता है कि मैं तो मिलर्स ही पढ़ के एग्जाम निकालूंगा, तो हो सकता है मिलर्स तो वो पढ़ लेगा बट एग्जाम फेल हो जाएगा. तो इट विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ डूइंग अ रेसिडेंसी, बिकॉज रेसिडेंसी इज बोथ अबाउट लर्निंग एंड पासिंग द एग्जाम. सो थर्ड ईयर शुड बी अबाउट द एग्जाम, एंड एग्जाम का पैटर्न होता है. अगर आपने पैटर्न को कैच कर लिया, वो आता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से. तो दैट इज वाई आई से 3 years इज इनफ. 3 years का पेपर जो होता है, दैट गिव्स यू 80% ऑफ द क्वेश्चन. यू मस्ट हैव रियलाइज दैट थिंग. Yes. एंड यू समटाइम्स डोंट इवन नीड टू नो 100%. वो भी एक बात होती है. बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं सर इतना सारा हमने पढ़ा नहीं, दीज आर द 25 टॉपिक्स दैट वी हैव नेवर रेड. सो आई कीप टेलिंग देम कि इस 25 में से 5 टॉपिक आ भी गए तो दैट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फेट, बट बाकी के 100 टॉपिक्स में से तो 50 आने वाले हैं. तो गो एंड रीड देम. I would like to interrupt you. Like you said कि सब कुछ 100% नहीं पता, तो again that format वाली बात आती है. I'll tell you my experience. Paper 4 में they asked on quadratus lumborum block. So अच्छे से I had written कि these blocks. So I was also solving the internal assessment papers of the various medical colleges. तो क्या अलग दिया उन लोगों ने उसमें से. तो QL ब्लॉक मुझे लगा कि पढ़ना है, ऐसे लिख कर रखा, बट यू नो इतना वास्ट है, जो आया है वही कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड क्यूएल ब्लॉक वाज नेवर आस्क्ड. तो छूट गया. एनीवे एग्जाम में देखा क्यूएल ब्लॉक क्या है, वही इंट्रोडक्शन, वही जो पैटर्न है, इंडिकेशन, वही यू सोनो एनाटॉमी, थोड़ा क्या प्रोब यूज करना है, योर कॉम्प्लिकेशन तो सबका एक ही जैसा होता है, ये करके बना के एटलीस्ट 0 नहीं तो 5 में से कम 1.5 तो देंगे. सो दैट हाँ यही. बिल्कुल, और ज्यादा ही देंगे, क्योंकि वो भी जब पढ़ते हैं तो उनको भी इतनी स्पेसिफिक चीजें कई बार ढूंढ नहीं पाते. जब उनको दिख रहा है ना कि सब कुछ तो लिखा है, तो एक आधा अगर आपने मसल का नाम गलत भी लिख दिया है तो वो भी ओवरलुक कर जाते हैं कि हाँ हाँ इतनी गलती तो किसी से भी हो सकती है. तो यस, दैट इज आई एंड आई फील मुझे कभी पीजी एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं हुई. दोनों मैंने डिप्लोमा डीएनबी दोनों एक एक बार में. तो आई फेल्ट बिकॉज ये जो है ना, मैंने पिक कर लिया था बहुत पहले, और मुझे समझ में आ गया था कि पीजी तो एक्चुअली में इजी एग्जाम है. अंडर ग्रेजुएशन में तो फिर भी बहुत वेरिएबिलिटी होती थी कि किसी ने कोई टफ एग्जाम सेट कर दिया तो अपने को आता नहीं है. बट यहाँ पे इफ यू क्रिएट अ थीम, देन एंटायर एनेस्थीसिया ऑलमोस्ट 60% तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको आता है, बिकॉज दैट इज. एंड यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलता हूँ कि जो करते हो वो लिख के आओगे तो कभी गलत नहीं होगी. एग्जैक्टली. क्योंकि जो कर रहे हो एवरीडे ओटी में, उससे पेशेंट जिंदा है. अगर पेशेंट जिंदा है मतलब आप सही कर रहे हो, और अगर आप सही कर रहे हो तो उसको लिखोगे तो कोई भी एग्जामिनर दुनिया का गलत नहीं बोल सकता ना उसको. यू आर डूइंग राइट थिंग एवरी डे इन द थिएटर, सो देयर थ्योरी प्रैक्टिकल शुड नॉट बी डिफरेंट. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे डू दिस मिस्टेक कि वो क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं कि जो हमने ओटी में किया है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा नहीं होता, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना. जो आप कर रहे हो वो भी तो सही है. तो जस्ट रिप्रोड्यूस दैट. जो नोट्स हम डालते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में को एग्जिस्टिंग में हम वो नोट्स ही डाल रहे होते हैं एक तरीके से. एग्जैक्टली. नाइस नाइस, रियली नाइस. सो अभी आगे क्या प्लान्स हैं फ्यूचर? Future तो like there's a plan A and a plan B. So plan A is like my husband, he's in Europe. So if I would go, then plan B है कि वो आ जाए, तो वो आ then जाएगी. go for SS or something. तो So hey, there are things in the pipeline.
Nice. But this is right now the time to enjoy, and I think you must be having some bond also. Yes, sir. So Yes. हाँ तो वो वगैरह सब. So it was really really nice talking to you. Just give your final some, if you have to give some tips to your juniors who are now, who will watch this video and will feel कि हाँ हम भी कर सकते हैं. So what would you tell them? So I would say like write and write, because if you get into the habit of writing in the exams, like things will just flow automatically when you're writing your answers. So I would say like in the 3 hours of time every day, at least I wrote 55 pages. So it only helped me because I was into the habit of writing. So writing like 13 pages for every answer, aisa you have to, will not come unless you get into that habit. So this, and I would also suggest that invest in a good tab or iPad and start making notes. Because if you have that PDF, you can have it in your phone. Whenever and wherever you get time, you can just open it and you can read it. You don't have to carry bulks of books in your bag. You don't have that, whatever you, if you're not wanting to study one particular system, you want to study something easy, you have your notes in your hand, you can just revise it. Because so it's me coming from such a busy institute, I know it was so difficult to get time. And then when you reach home, you're already so tired. So when you're fresh in the mind, you're in the UR and you get some time, so just open your phone and just go through it. Thirdly, like Wonderful. Using technology, very very important, very important. enjoy your residency. Like this time will never come again. Never So come. I like enjoyed a lot. So You must be already feeling that void, है ना. अब वो कोई प्रेशर नहीं है, सवेरे उठना नहीं है, कोई अपने को ये नहीं बोल सकता ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों ट्रॉली में क्यों नहीं लगाया. बट यस, यू डू मिस दैट टाइम विद फ्रेंड्स. We are all in the same boat. So nice. Write and write. I'm going to use this a lot because you just kind of reiterated the fact that I've been saying since last 2 years कि अगर इस एग्जाम में अच्छा करना है तो लिखना पड़ेगा. देर इज नो टू वे अराउंड. एंड एनीबडी हु थिंक्स कि मैं नहीं दे रहा हूँ नोट्स या मैं क्यों उनको लिखा रहा हूँ, तो दिस इज द रीजन. बिकॉज इफ यू वांट टू रियली डू वेरी गुड, then you will have to make that effort and write everything. Wonderful. Thank you so much, Shafaq. And it was really, really nice talking to you. And of course, we'll stay in touch. And heartiest congratulations again. And see you soon on the other side. thank you so much, sir. Thank you so much for giving me this privilege. Wonderful. Bye. Good night.